हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बैगी पॉइंट जा रहे हैं वॉक के लिए। ये हमारे घर से 30 मिनट्स की ड्राइव पे है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये थोड़ी सी वहाँ का एडवेंचर शेयर किया जाए। सो दिस इज़ द बोन फ्रॉम अ लॉर्ड वेल जो वॉश्ड अप हुई थी ऑन क्राइड बीच ऑन 1915। तो उन्होंने उसको सेव किया है, प्रिजर्व किया हुआ है विजिटर्स और फैमिलीज़ के लिए। These are used pollen to make their food. We have hidden flowers for you to find. Run through the spring maze to each of the flowers. How many can you find? Bonus. Can you buzz while you run too? It's a red clover. It's a tobacco. It's a tobacco. Tobacco, whatever it is. Cyclamen. You are the winner or you the loser? I'm the winner. सो ये एक जगह थी जहाँ से हम नीचे गए। मैं तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, बट इनाया वेंट विद हर डैड। तो यहाँ पर स्टेयर्स सी बनी हुई थी, जैसे उसको स्टोन्स को काट काट के बनाया हुआ था। आई डोंट नो एग्जैक्ट हिस्ट्री, बट कहते हैं कि ये यहाँ 100 ईयर्स पहले जो स्मगलर्स आते थे उन्होंने ये बनाई हुई है। और इसके साथ ही एक केव भी है। Is going down the hardest part? Yeah, I think the going down is the hard part. Yeah, but going up, it's kind of the easiest part. Yeah. Remember the scale, we might go in the cave. We might Want to go to the cave? What? There's like a cave. Oh, yeah. It is beautiful. Wow. Because it's a cave. Ooh. Yeah, somebody's written their name. As you can see, some people are here for rock climbing and they are wearing their protective gears. Naya, you are the pirate of the day. Say hooray.
थोड़ी देर के लिए गए थे नीचे। यहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त स्टेयर्स बनी हुई हैं। इट वॉज़ फन गोइंग डाउन देयर। वॉक तो हमने शायद कम ही की थी, लेकिन हमने एडवेंचर ज़्यादा किया था तो विद इन आया। सो इट्स अ वेरी गुड वॉक, कोस्टल वॉक है। हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं वॉक के लिए। Look at this sign. It says, let's go home. Well, maybe let's go home and make some more chicken sundae. Because I really need some more. And anyways, don't click off the video yet. We're going to go. They're jumping in. Guys, if you like my videos, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Happy cooking. Allah Hafiz.